education policy. Very few of us actually understand what is the new education policy. अब या पूर्व जमी नवनीता मैडम आपण मानू कहले दीटा तीनटा पॉलिसी हो जाइए आपण जदि से दी तीनटा पॉलिसी अनुध्यान करेंगे से माने जहाँ कहते न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑलमोस्ट एक्सेप्ट फ्यू पॉइंट्स व्हिच आर वेरी गुड से या कही आमर जो प्रॉब्लम थिला इन नेशनल इंटीग्रेशन मु नेशनल इंटीग्रेशन कहूनी मु कहूँ देशटा को गढ़ा देश गठन which is called इंग्राजी रे कहूँ आम नेशन बिल्डिंग. नाउ नेशन बिल्डिंग केमती करा है व्हाट इज द प्रोसेस आम भाया जो एथनिक डिस्पैरिटी सब प्रकार डिस्पैरिटी भारत में अच्छे बट देयर शुड बी अ वेरी गुड सिंथेटिक पास्ट यू शुड स्टैंड ऑन ए पास्ट व्हिच इज वेरी रिच तुमको पास्ट आउ किसी हेल्प करू कि न करू इट विल गिव यू दैट इनर कॉन्फिडेंस टू स्टैंड अपराइट कीपिंग योर हेड हाई जोटा सार या पूर्व कहते सेकेंड हूँ आज दिन में आम कौन कौन करूँ जहाँ आम गर्वित हो पार आम जदि आम निज काम गर्वित नुह देन वी ऑब्वियसली कैन नॉट बिल्ड ए नेशन आमर साहस ही हेनी. National integration is a part of the nation building. If you do not get integrated, you don't build a nation. And tritiya hochi, do all of us have a cohesive dream? आमे गोटे स्वप्न देखिछु कि एही रास्ता रे जीवु एठी पहुंचू. ये तीनटा होची गोटे देश गठन पे दरकार. आपण पास्ट जदि देखिबे भारत हो ओडिशा हो आई एम नॉट डिस्टिंग्विशिंग. यू सी इंडिया आई विल गिव ए two examples of the past. R.K. Lakshman जो छुआ माने मरीगले किसी दिन है he was a famous cartoonist. तांकर गोटे कार्टून अच्छी महात्मा गांधी के ऊपर से गोटाए घर रूम अच्छी झरका गुराक सब खोला है आउ पवन आसुची कर्टेन गुराक पर्दा गुराक हलुची आउ सेठी महात्मा गांधी कहउचंती कि I am admitting winds of all nations, all sides into my house. But mu sitha tiyari, mu holibi, parda holu. I will assimilate what I get. India, over the years, its past, its culture is best defined by this. Let me give one example for what we have achieved during the 70 years of independence. मु बहुत लोक शुणुची तुम मान भी पिला मान को बहुत लोग कहे आम गोटे 1.4 बिलियन पॉपुलेशन 1.42 आम किछि करिनु वी आर ऑल यूजलेस. मु गोटे एग्जांपल दोची अगेन लक्ष्मण कार्टून केम ए फ्यू इयर्स बैक व्हेन ही वाज अलाइव कि नेहरू गोटे शगड़ गाड़ी रे बसचंती शगड़ गाड़ी पछरे गोटे रॉकेट लगाई आउ से शगड़ गाड़ी में रॉकेटा लगे से श्रीहरिकोटा को लेकिन जाऊँगी कि रॉकेटा ऊपर को जीव सैटेलाइट जितेबले होमी बाबा गोटे कथा कही जितेबले किसी काम करूनी तुम पाखे रिसोर्स ना तुम पाखे संबल ना टंका ना व्हाट इज देयर विथ यू इज दिस द थिंकिंग द इनोवेशन एंड इंडियंस आर ग्रेट इन इनोवेशन. यू सी द स्पेस प्रोग्राम, you see the science and technology, you see agriculture, you see the किछि ना गोटे छोटिया दूध मिशन नियंतु भी गोटे कुरियन बेली मनिष थिला मलयाली who revolutionized the milk distribution. गोटे एबे तांकर गला who revolutionized the agriculture. You saw in 1/50th of the cost India is sending satellites and that is one part of your national integration. को कोन रे बसी कि तमे टीवी देखुछो मोबाइल चलुछो. So, nation building, if you look at the performance on which we can dream, you dream on a performance. Now, if you dream on a performance, our performance has not been so bad. We are industrialized, we are self-dependent on foodstuff, and our GDP is a $3 trillion. So, think about this, think about the positives. The issue is, can we dream? Then what are the tools for achieving this dream? Then we come to the title that Upendra Babu has given, that what is a tool?
Many tools, sir माने बहुत tool कथा कहले, but the biggest tool if you think is education. आपण आजिरे दिन रे सोचंतु भाबंतु तम माने सब यंग पिला तम माने एठी काई कि आसी बसिना मुफ्त भाषण सुनिया बहुत पिला आसी काई आसी तमे पाठ काई पढ़ुच चाकरी पाइकरी गोटे लाइवलीहुड जनरेट करने खाली पेटरे कई ड्रीम देखे खाली पेटरे ड्रीम देख तमे इडली वड़ा संबर कि भात डालमार स्वप्न देख आउ किसी देखिपर सो तम पेटटा आग भर what creates individual thing, what is a tool to create individual wealth, collective wealth of the society, collective wealth of the nation and collective wealth of the world. Imagine तम माने सब छुआ के जन्म होई नथला 1995 रू 2005 2006 the service sector revolution. The service sector revolution brought in 50% of Indians getting into IT services. And आज जो $1 trillion economy देखुचंती, that $1 trillion economy has come out of that. So times have changed. Whether you are going to be ethical, whether your values you will obey a set of values, and whether you would work towards nation building. The first condition is your individual aspiration and your individual wealth creation is the first. And education, today's definition of education, is the only one which helps you create individual wealth first, and then societal wealth, then your aspiration, then collective national aspiration, and then global aspiration. पेटटा खाली थे एनवायरमेंटल चेंज टाक बंद करी कहीं भावे सो दैट इज द फर्स्ट थिंग एंड फ्रॉम देयर यू हैव टू पेटटा को पोषिबा को हेले योर एजुकेशन मस्ट चेंज एंड दैट इज व्हाट इज वन ऑफ द इश्यूज दैट न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैज हैंडल दैट आमे जतबे पाठ पढुतलु आम सार माने कहउतले प्रथमे पाठटा को बुझ इट वाज ए नोबेल गोल यही आम कहूँ पाठटा को बुझु आ चाकरी करने को जो दक्षता दरकार स्किल दरकार हुनर दरकार ताकू भी सीख एंड एनईपी इज इंटीग्रेटिंग बोथ आउ किछि करे करूची वी हैव ए कंट्री ऑफ 40% सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप तेणु आमर एइने दरकार होची कि मु आज पाठ पढुची वर्षक पर छाड़ीदेली चाकरी कली बाप माँ को पोषिली दिवर्ष पर आसिक कंटिन्यू कले सो मल्टीपल एग्जिट मल्टीपल एंट्री मल्टी डिसिप्लिनारिटी एने यूजीसी कालना पर नहीं लास्ट वीक पीजी शिक्षार रेगुलेशन बाहर करची कि मुझे हिस्ट्री पढ़ुथेबी किंतु फिजिक्स रो एंट्रांस दे पास कली मु फिजिक्स पढ़ी मिताली मैडम विल नॉट एग्री टू एडमिट इनटू इकोनॉमिक्स ए पर्सन कमिंग फ्रॉम हिस्ट्री बट शी विल बी फोर्स्ड टू. So this vertical migration, horizontal migration are some of the areas which are new and which NEP has given. NEP tells you look at Indian knowledge system. Why? Because it wants to build a nation you must first be proud. आपण माने को जाति रहंतु को रिलीजियन रहंतु आपण इमेजिन करंतु 83 रे कपिल देव से कप टक धरी ठिया all of you are proud. Whoever was born that time तापर जते कप हला यू आइडेंटिफाइड विथ इट पोखरण रे जते बेले सेकंड एक्सप्लोजन हे इंडिया कहला वी आर न्यूक्लियर कैपेबल कि जते बेले आपनकर रॉकेट सैटेलाइट जाईकरी चंद्रयान पहुंची गला यू ऑल सेलिब्रेटेड व्हाई डिड यू सेलिब्रेट यू सेलिब्रेटेड बिकॉज़ दैट इज द नेशंस प्राइड एंड दैट इज अनदर फैक्टर व्हिच इंटीग्रेट्स ऑल ऑफ अस सो द इंडियन नॉलेज सिस्टम skilled in India or skilled in Odisha that we are telling, the pride, the achievement are the unifying point of national integration, and the only thing that actually catalyzes it is education. Then आमे एने होमियोपैथिक मेडिसिन भलिया कहूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी आसीगला सबू हो देयर कैनॉट बी
a truth are more away from the truth than this. It is a policy. Who will implement it? The only good thing about NEP is there is a government which is firmly behind it. So hopefully the new education policy will come. All of you will have one of the major things that new education policy has brought is another thing which Mahatma Gandhi spoke in 1937, that learning is best done by doing it. And when you do, that is the best place to learn ethical practices. रिक्शा वाला टे रिक्शा चलाउछि तमे जदि जिंदगी भर एयर कंडीशन में बसिल तमे ताको देखले कहबो एटा रिक्शा वाला टे कि तमे जदि तारी साथी रे खरा रे अप्रेंटिसशिप करिछ क्षेत्र काम करिछ you will understand the value of sweating and you will also appreciate the smell of sweat. And that is important, and that is what NEP brings in. And I hope we find a mechanism to put it into practice. NEP implementation is the most difficult part. Everything is there. Nobody knows how do we implement it fully. And nobody knows which are the critical paths that we must not avoid. Otherwise, it becomes a failure. So whatever, I am not elaborating on NEP. As I told you, are already late. I can talk next 1 or 2 hours on NEP. But in Odisha, we are trying today to build a common structure which, to the best of our ability, looks at internship, looks at community exchange. Fortunately, Odisha has 2 good via media, more school and more college, which automatically brings in the via media for alumni and community exchange. These are fantastic concepts, but these concepts have to be implemented on the ground so that nobody is left out. The concept of inclusive excellence is that every child gets a first division, not only 10%. If more than 50% get employed, not only 10%. That's the objective. So Odisha has already implemented a research and innovation ecosystem. Now, whatever name they call it, Odisha has implemented that Nuao scholarship. I would like to view it as a technology updatation fellowship. You know, one of the biggest hurdle in us implementing new education policy is the digital divide. तमाने कोविड बेले देखिथिबो कोरापुट रे गछ ऊपर चढ़ी झियो छुआ गुराक मोबाइल ऊपर को देखौचंती कि सिग्नल आम पाखु आ. Today, students like you, if you get that 10,000 bucks per year, a annual subscription for a data 2.5 gigabytes of data per day is approximately 2,500 rupees. You imagine, data almost becomes your fundamental right. This was one of the most difficult things to be implemented in India, that every child has a data access. Because if you don't have data access, these online courses ka matlab kya hai? So NEP gives us avenues. NEP has government behind it, and hopefully 6% of GDP would come into this, which has not come. And hopefully state governments will realize that a methodology or an institutional development plan be there where the aspects of NEP which are important are implemented. And then and only then you imagine a country where most of the people are educated, then you will in a full stomach, you will start thinking about roads, railways, environmental pollution, fusion reactors, energy problem, and so on and so forth. And you prosper, the country prospers. A good education is the key. I still hold nation building
education is one of the most critical precursors, and we should, and all governments should focus on practically implementing a good education policy. Whatever name you call it, I am not bothered. I want my young children to be employed, 70-80% get employment, and then invest their time and money in uplifting the nation for a sustainable. Sorry that too much of preaching happened, but I enjoyed looking at this auditorium again, and I thank Upendra Babu for having given me this opportunity. Thank you. God bless. आमे अनेक अनेक कृतज्ञता अर्पण करुଛୁ प्रोफेसर दास महोदय निकट में एक एकदम सत से विद्या थिला सा विद्या जा विमुक्त है एवं संज्ञा परिवर्तन होती सा विद्या जा निजुक्त है जदि निजुक्ति ना तेरे से विद्या प्रति आम अनाग्रहता परिप्रकाश हवा एक स्वाभाविक प्रक्रिया किंतु अन्नचिंता चमत्कार कातरे कविता कृत एक सत जिते खाली पेट से नेशनल बिल्डिंग कथा आम केमती चिंता करवा किंतु एवं असुविधाटा जे आम आरंभ भात पर चिंता नक फ्राइड राइस में चिंता करुचु से नेशनल बिल्डिंग थोड़ा टिके दूरी जा एक स्वाभाविक प्रक्रिया धन्यवाद एवं